Dev Aharam is a social initiative of BSSS. And the contribution by the staff, students and well-wishers has been overwhelming. Every guest who has entered our college has become a part of this noble cause. By doing away with the custom of giving bouquets, we have made our guests a part of this social enterprise. It has generated interest amongst the student community, and their regularity is a proof in itself. It has emerged as one of the best practices of our institution's out-of-classroom learning, through which we have relentlessly aimed at providing a one-time meal for more than 250 outpatients and caretakers of AIIMS.
leading people. If we can systematically reason out and make conclusions, it will always be something believable. So this is always explaining something, maybe a belief, maybe a reason, maybe a principle, something of that sort, but then in a systematized way. So when you speak about social and political philosophy, it's very complicated. I'm sure that Father C.D. Sebastian is an expert on the topic, and he will enlighten us on this social political philosophy. It's wonderful, you know, the reasons behind and how it should actually take shape in the society. Not what the practices are today, probably, but what it should be. I'm extremely happy that we have also other guests from other universities, online, offline. Thank you for coming to BSSS, and very particularly because this is our golden jubilee year, and we have a series of celebrations, seminars, workshops, discussions on various relevant topics to mark this year. So we are happy that you are a part to it, and we once again welcome you and fruitful sessions ahead. God bless. Thank you so much, Father, for your pearls of wisdom. Moving ahead, we now commence with the first session of today's workshop titled Ethics in Politics in the Contemporary Scenario. The session will be mediated by Father Dr. C.D. Sebastian, who is connected with us through the online mode. Dr. Sebastian is a visionary who worked in Buddhist philosophy, Sankhya philosophy, Vedanta philosophy, and philosophy of religion, which has been a prized position for the researchers and scholars across the globe. A Banaras Hindu University alumnus whose research interest lies on Indian philosophy, comparative philosophy, emotion, empathy, and moral cognition. I hereby invite Dr. C.G. Sebastian to take over the forum and elucidate the audience on this principle, on the very principle of ethics and the associated values. Can I take over? Sure, sir. Sure, sir. Please Yeah, do. yeah. Thank you. Thank you so much for the kind introduction. Am I audible? Am I audible? Okay, okay. So I'm immensely grateful to Professor Sangeeta Mahasapte for inviting me onto this wonderful occasion. First and foremost, let me congratulate Bhopal BSS on its golden jubilee. Dear and Reverend Father John PJ, Principal of the College, Sister Dr. Sonia, Vice Principal, Dr. Sangeeta Mahashapte, Head of the Department of Philosophy, my colleagues, friends, students, and all those lovers of this who have joined from different places. I think there is an echo. I am getting an echo. Okay, okay, I am okay. So I thank all of you for inviting me to this event. And the topic given to me is ethics in politics with reference to contemporary current scenario. I am a student of philosophy, and I would like to conceptually lay down the ethics in politics first and give some sort of indications with reference to current scenario in India and in other countries
where ethics is of paramount importance when it comes to political deliberations. And it is not only for the students of political philosophy, moral and political philosophy, but it is above all, it's a matter of concern for all the practitioners of politics. And let us keep one thing in mind. All of us are political. Don't ever say that one doesn't have any political view. All of us are political. Non-political existence is not possible in a society. If I am a citizen, ipso facto, I will have my own political views. If I go to vote, if I go to cast my vote, it shows that I have a political view. I have a political conviction. I believe in polity. I believe in the polity of citizens. And in India, a citizen is known as a Nagarik. He is a citizen. He is a dweller of the city or the place. And in a democratic setup, all of us are citizens and all of us have got political views. In that sense, ethical nuances in politics is very much part and parcel of my view, your view, our view. And let me at the outset make a differentiation between a Nagarik, a citizen, and a praja. In monarchical systems, where a king, a Raja is ruling, he will have praja. Raja, praja, king and subjects. The people whom he ruled are the praja. But when it comes to a democratic, republican way of doing things, representative parliamentary system, one is not a part of the praja, a subject. She or he is a citizen with equal rights. And I love to call myself as a citizen of India, as a Nagarik of India. And I would never like to call myself as a part of the Praja of India. This distinction is very much. When we philosophically look at the democratic, republican, parliamentary way of life, each individual in a country is a Nagarik, is a citizen. And he or she has equal voice when it comes to ruling, policies, administration, and so on and so forth. This is my opening comment. And let me come to the politics, political ethics in academic studies, in academia. We call ethics in politics or political ethics. As we know, ethics is concerned with right and wrong in the context of a person's daily living. It's all about right and wrong. Hence, ethics in politics is called political ethics or political morality of public ethics. It's a practice of making moral judgments about political actions of the political leaders and the study of that practice. So what is important is to look at it from the point of political morality and judge what is right and what is wrong. And as I said, when we study academically in political science, philosophy, departments about political ethics, there are two branches. As a field of study,
It is divided into two branches. One is ethics of process, and that is the ethics in the offices. It focuses on the public officials and the methods they use, means all are critical based, and all the methods they use to govern and administer justice to the people. And the second is the ethics of policy, and it deals with ethics and public policy. It focuses on judgments about politics and policy and laws. So, for the students who are listening to me, let me tell. My focus is mainly on the students, not so much on the teachers. Students, please know, academically in philosophy department about political ethics, it has two branches. One is ethics of process, other one is ethics of policy. Ethics of process is related to those who are ruling us, and we make judgments on their actions. Both these are related to moral and political philosophy, democratic theory, political science. However, political ethics is a free-standing subject in its own right, and that's what today, all over the world, wherever ethical politics is concerned, people study about. And if we take these two, one is political ethics of process, other one is political ethics of policy. Let me come first to the philosophical framework of political ethics and give you some glances about how the current scenario is all about. The central question is the extent to which the ethical principles that govern the political office, to what extent are the politicians permitted to take action that would otherwise go wrong? Ethics requires political leaders to avoid harming the innocent. However, it may also obligate them to sacrifice innocent lives for the good of the nation. That also is there. They have to take a call. And when it comes to ethical problems, the political leaders confront arise from two general features of public office. Political leaders, when they are governing us, there are two facets. One is its representation. Second is it has an organizational character. So two characters, two nuances, two facets are there: representational and organizational. In representational way, political leaders act for us. That's the representational way of character. But when it comes to other organizational, they act with others. In organizational way, they act with others, not all alone. And because they act for us, they assume rights and obligations that ordinary citizens like me do not have. For the sake of those for whom the political leaders act, the duties of office may permit them to use force, tell lies, keep secrets, break promises in ways that would be wrong in private life, which we have. These and worse violations of our shared moral principles create what is known as the problem of dirty hands. And when you analyze contemporary scenario, there is so much of problem of dirty hand. And this dirty hand, which people recognize whether they are really dirty or they are not dirty. And why these dirty hands come to play?
because they have the domain to use force, lie, keep secrets, break promises, and they have to make decisions for the good of the nation. And if there is any good, always remember the bad things also will accompany. So one notion which I would like to tell my students, those who are listening to me, is that there is a notion of the two hands when it comes to representational character of political leaders. And ethical theories should be applied to make judgment on political leadership. And these theories are consequentialism and deontology, and mixture of both of them. Let me make it clear for my students. Consequentialism is we look at the consequence and we judge an action good or right on the basis of the consequence. And this is nothing but utilitarianism in ethical principles. As we know, students, friends, there are three normative ethical theories. One is consequentialism or utilitarianism. You judge certain actions right or wrong on the basis of its utility, its outcome, and if it is good outcome, it is a good decision, good action. If bad, it is a bad action. That is consequentialism. And there is the second normative ethical theory of deontology, where duty is of paramount importance. You are bound by the duty. I do it for the duty of duty's sake. As Gita says, karmanyeva adhikaraste ma phaleshu kadad. Your right is to do your duty, not look for the fruits of the actions. So duty is of paramount importance. That also comes when it comes to political leadership. They are bound by a duty to do what is good for the welfare and well-being of the nation and the countrymen. And if they abide by the duty-bound stipulations, then they are judged on the basis of deontological, normative, ethical principles. And if they are judged on the basis of the results of their actions and policies, then we judge them on the basis of consequentialism or utilitarianism. But there is a third kind of ethical theory which we use every day, and that is virtue ethics. And that you cannot find in the administration, in the political leadership. Virtue ethics. You do certain things for the sake of it, not for duty, not for consequence. You do it what is right and wrong because that is what you have to supposed to do. And when I look at Indian ethics, I have with me, if you can see me on the screen, this is Kautilya's Arthashastra in 3 volumes. And this is Kaumandikiya Nitisara, another political treatise. And I have the Buddhist ethical political theories as such, as well. So when I look at Indian political treatise, it's a mixture of deontology as well as consequentialism, what dominates in the Kautilyan Arthashastram as well Kamantiya Nitisara. But when it comes to the Buddhist political theory, it is none of them. It is the virtue ethics that is dominating. You do certain things, not for the result of it. You do certain things, not for the consequence of it. You do certain things, not because you are duty bound. You do it because that's the right thing at the right time, not because of any consequence, not because any duty bound, moral laden thing. But you do it for the sake of it, and that's the right thing of the thing. Suppose you see a child is falling, you just jump to take that child, not looking at the consequence of the fall, not looking at you had laid a duty to do that one, but you do it for the sake of it.
You do it because, not because there is a bad or good consequence, not because you are duty bound to do that one. You do it for the sake of it. And that is virtue ethics. And that is Aristotelian virtue ethics. And that is Buddhist virtue ethics. And the politicians are asked to do their actions. Leadership is do their actions on the basis of this virtue ethics. And that is Buddhist paradigm. Let me leave it there. But what you see today in contemporary scenario, consequentialism and deontological ethics loom large in the political discussions and discourses, not only in India, all over the world. And you know what happens with the problem of dirty hands? When there are politicians, those who take decisions on the basis of false or lies or things like that, the question is that how to punish or how to hold dirty-handed politicians accountable. But the leader who gets his hands dirty does so in the same name of the citizens and with their implicit approval, because I elected them. The moment we elect them and send them to make decisions for us, so indirectly they get the tacit, implicit approval from the population, from the citizens, because he or she is elected by the citizens. In that context of democracy of ours, the question is not what citizens should do to the leader, but what the citizens and the state should do to compensate the victims of such decisions, and how citizens can hold leaders accountable for decisions that are legitimately made in secret. And we have plenty of examples to quote when I am standing on the 8th of February 2023. I have many examples. I don't want to enumerate them. And you know, the weapon the citizens have is their vote. They can stop such a leader, such a representative, not to make decisions in future for themselves. At the same time, when the problem of dirty hand, it's up to them to mend and compensate the victims of those political decisions. That's all about dirty hands. Let me come to the next ethical problem which every day we are facing in India and elsewhere. And that's the conflicts of interest. There are rules governing public offices, usually referred to as government ethics, as we know. And there are so many large pool of literature available in this. The main issues that center on regulations of such a regulation is the conflicts of interest. What is that? Conflict of interest that happen everywhere, not only in politics, even in my academic life also I can have the conflicts of interest. What is that? Lobbying for X or Y, nepotism, appointing my own kith and kin, my own son and daughter, my own brother and sister in such responsible places, or handing over the resources to my X or Y businessman, industrialist, nepotism, or outside incomes, means I am whatever is not due to me, I get outside incomes in terms of political commissions. And you know that you know how things are happening, how contractors pay undue commissions to the elected representatives. And in India, in the history, day by day, political leaders are becoming richer and richer. And with their legal, lawful incomes, they can't become such enormously filthy rich people. So they have outside incomes, they have commissions and the like. And this is happening in the political life due to some conflicts of interest. One has to look at difference between individual and institutional corruption also.
Don't think that it is individual who is corrupt. The institutionally, it can also come to such sort of corruption, nepotism, outside incomes, lobbying, commissions, etc. and all. There is a connection between democratic theory and political ethics. For example, the demand for greater transparency rests on recognition that democratic accountability requires political leaders not only to act in public interest, but also show that they are doing so. This is very important. Very important. And not only that they should act, well, they should act in public interest, but also they should show that they are doing so. And if they don't show, then I have every right not to vote for such a representative of mine. And let me leave aside what is all about the conflicts of interest, and all of us know that one, and how appropriation of illegal, unworthy funds come to the hands of the people due to this sort of conflict of interests. Let me come to the next point, problem of many hands. That's a big thing, that's a big issue when you philosophically look at the decisions of political leaders, governments, as well as those who are not even in the higher levels, the lower levels of government procedure. The problem of many hands, people discuss widely these days, the problem of many hands is an issue in political ethics to hold someone responsible. It means that the organization or the organizational nature of public office of the political leadership, what we are seeing today, it's so difficult to ascribe responsibility to X individual, one single individual. Here the difficulty is not which principle to apply. It is not about that one. But which agents, who all are the culpable people, agents to apply them. Like in philosophy, we call it as agency. Who is responsible for such actions? Like any kind of morality, political ethics assumes that the persons whom it judges can be responsible for actions for which they are judged. But the structure of our public offices is so complex. And because of many individuals are involved in such organizational, ministerial, departmental way of functioning, and they all contribute in many ways to the decisions and policies, how I can hold someone responsible for that action, that policy. It's not one individual alone who is taking the decision. It goes through different ministries, different babus, different secretaries, different undersecretaries, and after that the decision is taken. Hence, it is difficult even in principle to identify who is responsible for the results. And that's the malady, that's the problem with our system of administration. Have you ever seen any political leader, because of bad policies, is punished? It's not possible. It is not possible because that is because of this problem of many hands. And I do not know how to address that one, and that's what we see every day in our lives. So 3 things please bear in mind when we look at political ethics. One is dirty hands, second is conflicts of interest, and third one is all about many hands. Now, come to the second aspect, political ethics of policy. And when we say of policies, political policies, that people, the leadership is implementing is supposed to be under public scrutiny and philosophical scrutiny to know whether it is right and wrong. Political ethics of policy is in a democracy examines what happens, all the policies the political leadership is taking,
I can enumerate some of them: the environmental policy, the policy on animal rights, the policy on abortion. And recently we had a debate in IIT Bombay, and one of my colleagues is one of the leading environmental economists, and she is in the UN also. So 2-3 years ago, Supreme Court of India, in a verdict, asked the tribals, those who are using the tribal lands of the forests, to stop cutting the trees and destroying the flora and fauna of the place. And we had a discussion. And my colleague, who is an environmental economist, she was telling in our debate, in our discussion, the policy which you are going to implement is going to affect the people, those who are depending on the forests for their livelihood. You ask them to get out of the forest areas and don't do anything, because their livelihood is maybe because of the firewood, maybe because of the resources they use from the forest, they get their daily bread. And you ask them to stop that one. That means you are doing an injustice, an unjust means of implementing the policy on them, because they are not equipped like you and me to come to Mumbai city to get my daily bread. They are not skilled enough to come and fetch a good job. They don't have anything else. And if political leadership is thinking in those terms, without considering the background of those people and ask them to shut up and get out, then that policy is intrinsically bad. Because what happens in such scenarios, Supreme Court verdict was wrong, and I argued in my class, in my ethics class, environmental ethics class, I said, insensitive judges can be insensitive, and as a citizen, we have every right to criticize any judgments, but not for the politicians also who are in the ministries and holding offices. They can't criticize. I have every right to criticize anything, even Supreme Court verdicts. What I am saying, insensitivity to the need of the people, those who do not have the skills as you have, and you make such a policy, and that's detrimental, that's something bad, but something bad politics. And those policies also will come under public scrutiny of the political ethics of policy, environmental ethics, and I have many things to narrate if you want to narrate. Let us leave it there. What I wanted to say, citizens have a right on an equal voice in deciding the policies. And citizens should make that voice heard in public places. However, there is a problem with that. In a pluralistic society like India's, like ours, there would be disagreement among the citizens about what policies are right and what policies are wrong. Even if a policy to be right, there is a need to consider whether in the light of disagreement, the policy should be modified, an alternative policy should be adopted, or exemptions allowed. There comes the ethics of compromise. And these days, this the ethics, the spirit of compromise. Princeton University, one of the leading universities is Princeton University, and papers. The ethics of compromise is a need of the hour. It's one of the latest books which has come out. And the ethics of compromise we need to do when it comes to policy matters. And this is what I would like to tell you. So what I wanted to sum up before I conclude is this one. Ethics in politics is all about the right and wrong of the actions of the politicians, those who are holding the political places. And first and foremost, let me make it clear, as I made it at the outset itself, that all of us are politically motivated. All of us are politically sensitive. And don't ever say that I don't have a political conviction. All are politically attuned. Because if one is going to cast the vote and cast an interest in the governing of the nation, then one cannot be neutral. One has to have a place. So that's important. So when it comes to such a scenario,
When I elect a government, when I elect my representative, whether it is panchayat level, whether it is block level, whether it is district level, whether it is state level, whether it is national level, I send my representative with a political voice. And when my representatives act, there is an ethics in political process and there is an ethics in political policy. And these are the things I would like to bring to my students. And I thought I am thinking with you as it is being discussed in political ethics these days, as of now, for the last 1 decade or so. And this is the way people are deliberating and discussing things, and that's it. And I have much to say about Indian way of political ethics from Kautilya's Arthashastram, from Kamandaki's Nidhisara, and the Buddhist parlance. Since the Indian perspective is given to Professor Chaturvedi, I am not opening that session, but this is what. Thank you very much for patiently listening to me. I'm immensely grateful to all of you for inviting me to this event, especially to Dr. Sangeeta Mahashakti. Thank you so much. On behalf of the BSS fraternity, I am deeply gratified to Father Dr. Sebastian for focusing on the most prudent concept of ethics and its prevalence in politics. Sir, your acumen in politics helped us imbibe the true essence of democracy, how to be an ideal citizen, especially in the mixed culture of the contemporary scenario. The forum is now open for questions. People connected with us through the online can post it in the chat box itself. Those who are here in person, the volunteers will be providing with the coordinates. You can confer your questions to the honorable guest. We can start by the in-person conversation. People here in the audience, anybody have any questions related to the topic discussed? You can raise your hand. Otherwise, people here can also post it in the chat box. We'll be retrieving questions from then and there. Good afternoon, sir. Sir, am I audible? Yes. You can come forward. Good afternoon, sir. Sir, am I audible? Sir, we have a question now from the audience. Yes, sir. Sir, I have a question that many people say that the Indian government is a catastrophic form of government where the citizens are incompetent. So is it true that they are really incompetent or is it a myth? I could not, I could not hear the questions. Can you coming closer to the mic? I could not decipher what he was saying. Yes, sir. Now is it audible? Yeah, please. Yes, sir. I was asking that many people say that the Indian government is a catastrophic form of government. Is it I true? cannot, I'm not getting you. I'm not getting you. Yes, sir. Is it also audible now? No, please. I heard earlier government. What did you say after that? I asked that the Indian government is a catastrophic form of government. What is that word? Catastrophic.
It means incompetent citizens who are in power. Is it true that the Indian government is a capistocratic form of government, or is it really a myth, as many people propagate it? You mean text? Can you type and the chat box? So, Can someone type it in the chat box? so the question is about the Indian government is mostly found that they are very incompetent in nature. So what are your views on that? Incompetent. So it will be there in the chat box about the citizens he's talking about. Type the meaning as well in bracket. Post this and then type the meaning as It's said that Indian government is incompetent citizens are in power of government. Is it true or is really a myth propagated by some citizens? And you are looking at the efficiency of the rule, the ruling class, right? Hello? Yes, Are you listening to me? yes, sir. which class to be specific? Mention it. I think I should not sit on judgment on a particular government, whether it is performing or whether it is not performing. And what I want to tell you is that if people have elected the representatives and if they are ruling you, they are taking decisions for you, then the onus is depending on you also. So if the incompetency you are seeing in them, that reflect the incompetence of the people those who sent them. And I do not want to make a black and white judgment whether those statements are true or false. This is a matter of perceptions. And this sort of perceptions can be created at any government. I am 55 years old now, and I became a person of interest after my 15th year, after my class of husband. And I have seen governments after government, the same manipulations used to happen. So I'm not in a position to make a categorical statement whether your statement is right or wrong. And I should refrain from such sort of statement as I'm a student of philosophy. Thank you, sir. Any more questions from the audience? I think God, Yes, thank you so much, Father, for elucidating the audience and as well the attending the questions as well, which seem to be quite ambiguous in the initial stage. But thank you so much for joining with us. We look forward to more such associations. thank you so much. We'll be heading out for a short tea break. The workshop session will be resumed by 1 o'clock. Please be seated. It will start by 12:30. Till then, please be there on your
your seats. We need not disperse. At 12:30 sharp, we'll be heading out for the tea break, and at 1, the second session will be resumed. Uh, Attention, please. You just have to sit on your seats. Don't have to disperse. Please be seated. The lunch boxes and tea will be provided to you then and there. It will come to you at 12:30 sharp. Till then, please be patient. Thank you. हेलो हेलो आज के प्रोग्राम में उपस्थित विद्यार्थी स्टूडेंट्स डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस के द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप में फादर जॉन पीजे उपस्थित थे। अभी शायद किसी काम से वो गए हुए हैं। अभी हम सभी लोगों ने सीडी सेबेस्टियन जो प्रोफेसर आईटी मुंबई में फिलोसफी के प्रोफेसर है उनको सुना। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं संगीता महासत्य मैडम,
आदरणीय मेहता मैडम, रंजीत कौर मैडम, आपका स्वागत है और धन्यवाद। जो मुख्य रूप से आज के इस प्रोग्राम की जो थीम है, इंडियन पॉलिटिक्स थ्रू द लेंसेज ऑफ वेदास। तो जो इंडियन पॉलिटिक्स है या भारतीय राजनीति है, उसको हम वेद के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं कि कैसा सिनारियो इंडियन पॉलिटिक्स का है। एक्चुअली हमको पॉलिटिक्स भी समझना होगी कि व्हाट इज द पॉलिटिक्स। जैसा कि अभी सेबेस्टियन सर ने समझाया था बहुत डिटेल से कि पॉलिटिक्स क्या है और उसके अकॉर्डिंग एथिक्स क्या है। पॉलिटिक्स एक एक ऐसा नेरेटिव है कि जब हम कभी बात करते हैं कि पॉलिटिक्स, तो हमारे मन में एक बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव नैरेटिव सेट होते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, या जनरली हम बात करते हैं कि वहाँ पॉलिटिक्स हो गई या वहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। तो एक पॉलिटिक्स को या एक हम लोगों ने नेगेटिव सेंटिमेंट्स के रूप में हम लोगों ने उसको, आजकल एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया था। वो क्वेश्चन जनरली हम सभी के लिए बहुत रिलेवेंट है। कैकिस्टोक्रेसी, ये बहुत अच्छा वर्ड है और जो 17th सेंचुरी में इवॉल्व हुआ और बहुत सारे देशों के लिए इसको उपयोग में लाते हैं। अभी जो सिनारियो चल रहा है, इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द मदर ऑफ डेमोक्रेसी की एक सीरीज, लेक्चर सीरीज में वो उन्होंने कई बार लेक्चर्स दिए हैं कि इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र की जननी है। अभी ऐसी एक धारणा है, जैसा हम लोग मानते हैं कि लोकतंत्र वेस्ट ओरिजिनेटेड है, पश्चिम से हम सभी को प्राप्त हुआ है और एकदम मिल गया। फिर लगातार भारत में लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की सक्सेस को देखते हुए ये ऐसे नैरेटिव्स लोग जानबूझकर हमारे ऊपर सुपरपोज कर देते हैं कि ये एक कैकिस्टोक्रेसी है। अब इसके तथ्य भी हैं बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कभी डिस्कस करते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो एक इलिटरेट पर्सन जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है लोकतंत्र का, इवन फॉरेन पॉलिसी का, जब आम चुनाव होते हैं तो एक बहुत दूर अंचल में रहने वाला व्यक्ति जो कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है या न्यूज़ भी नहीं देखता है, वो भी, उसको भी वोटिंग के राइट्स है और हम कहेंगे कि वो भी भारत की विदेश नीति को डिसाइड करता है। इज इट ट्रू? वो भारत की विदेश नीति पर वोट करता है जिसको फॉरेन पॉलिसी का एबीसीडी भी नहीं आता है। तो इसीलिए ऐसे सब भारतीय लोकतंत्र के लिए कुछ लोग कहते हैं। तो इसको भी हम कभी आगे इसको देखेंगे डिस्कशन में। फिर जो वेद हैं उनमें लोकतंत्र बहुत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। हम जब कभी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारत के ऐसे बहुत सारे राज्य थे जहाँ पर लोकतंत्र पहले से विद्यमान था। जैसे बिहार में हम जाते हैं तो वहाँ लिच्छवी राज्य था, तो लिच्छवी राज्य के अंतर्गत गणतंत्र प्राप्त होते थे। जैसे मल्ल, वज्जी, अंग, ये यहाँ के जनपद थे, यहाँ पे राजा को इलेक्ट करते थे। ये परंपरा बाद में भी विद्यमान रही है। ऋग्वेद के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हमको राजा के चुनने का अधिकार मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित है देवासुर संग्राम, देव और असुरों का संग्राम या देव राक्षसों का संग्राम। फिर हम लोग ने कल्पना कर ली कि राक्षस बहुत जाइंट, फिजिकली बहुत जाइंट्स होते हैं
और एक अलग इमेजिनेशन कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। हम लोग देवासुर संग्राम की बात करते हैं, जब राक्षसों से देवता लगातार हारते जाते थे, फिर उनकी मीटिंग्स होती हैं कि हम लोग राक्षसों से क्यों हार रहे हैं। फिर डिसाइड होता है कि हमारा हमारा कोई एक व्यक्ति नेतृत्व नहीं करता है। फिर उस मीटिंग में डिसाइड होता है और इलेक्ट करते हैं इंद्र को एक राजा के रूप में। और फिर इसके बाद जो वॉर होते हैं उसमें देवताओं की जीत होने लगती है, क्योंकि उनके पास एक लीडर है, इंद्र एक लीडर है। तो ऋग्वेद में हमको राजा या लीडर को इलेक्ट करने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, उसके रेफरेंस भी हैं अपने पास। अब हम देखते हैं कि राजा और देवता और राक्षसों के बीच में संघर्ष को हम लोगों ने उसको एक मिथिकल या मिथ बना लिया, जबकि राक्षस कोई और नहीं थे, वो रक्ष संस्कृति का पालन करने वाले लोग थे। रक्ष संस्कृति क्या होती है? जो बहुत सारी संपत्ति का रक्षण कर लेते हैं, जैसे मृग मारीचिका, स्वर्ण मृग, फिर स्वर्ण की लंका, सोने की लंका किसके पास थी? रावण के पास थी। और रावण कौन था? राक्षस था। क्यों? क्योंकि उसने जनरल पब्लिक का बहुत सारा धन उन पर आक्रमण करके लूट के अपने यहाँ एकत्र कर लिया था और सोने की लंका बना दी थी। और देवता कौन होते थे? जो दान देते, जो हमेशा देते रहते, चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे संपत्ति हो, कुछ भी। इसलिए उनको देवता कहा गया। देवता कई प्रकार के होते थे। तो देवता और राक्षसों का संघर्ष यही था कि जो संपत्ति है उसका समान वितरण हो। जो आजकल हम लोग बात करते हैं ना, संपत्ति का समान वितरण, तो संपत्ति के समान वितरण की लड़ाई या संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वो देवासुर संग्राम है। और देवासुर संग्राम में जीत के लिए इंद्र को इलेक्ट करने का विधान मिलता है। फिर मैत्रायणी संहिता में कहा गया है, यथा राजा तथा प्रजा, यद राजा करोति तद विद करोति। मतलब जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, और जैसी प्रजा होगी वैसा राजा इलेक्ट होगा। तो आज भी हम लोग देखते हैं कि जो मैत्रायणी संहिता का जो ये श्लोक है, ऋचा है, उसमें राजा को कैसे चुनने का अधिकार है कि प्रजा के अकॉर्डिंग राजा होगा और राजा के अनुसार ही प्रजा होगा। जैसे वर्तमान लोकतंत्र से अगर हम लोग कंपेयर करें, कि अभी भी बात हुई कि वर्तमान लोकतंत्र में इलिटरेट राजा भी हो सकता है। राजा का शब्द एक हम लोग राजतंत्र से ना लेके एक अभी ऋग्वेदिक पीरियड है, चूंकि वहां राजन मीन्स नेतृत्वकर्ता से संबंधित है। तो जो राजन है वर्तमान संदर्भ में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट में, तो वो एक इलिटरेट पर्सन भी हो सकता है। लेकिन ऋग्वेदिक व्यवस्था में इलिटरेट पर्सन राजा नहीं हो सकता है। और आज अगर कोई एक नेता है और वो उसके दुर्गुण है या वो हैवी ड्रिंकर है, तो हम लोग उसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको इसका एक प्राइवेट इशू मान के उसको डाइल्यूट कर देते हैं। लेकिन ऋग्वेदिक काल में ये सारी जो ड्रॉबैक्स हैं वो सारे नहीं थे। कोई उसका प्राइवेट लाइफ नहीं था। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक लाइफ में है, इसीलिए ऐसी चीजों को वहां पर बहुत डाइल्यूट करके रखा है। और जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ राजा भी ऐसा हो सकता है जो इलिटरेट हो, और हमारे यहाँ वोटर भी ऐसा हो सकता है जो इलिटरेट हो। इसीलिए जो अभी कैटिस्टोक्रेसी की जो बात हो रही थी, वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि हमारे यहाँ जो वोट डालता है उसको फॉरेन पॉलिसी है, अपनी इंटरनल पॉलिसी है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो केवल कुछ फ्री मिलने पर भी वोटिंग कर सकता है। तो कैसा सिनारियो होगा उस देश का जहां पर लोग फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, एक फॉरेस्ट में रहने वाला पर्सन। तो इसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है वेदों के अकॉर्डिंग, कि उसमें ये था कि अगर कोई व्यक्ति
राज्य को टैक्स देता है या मिनिमम टैक्स देता है या उसके पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो उसको वोटिंग राइट्स होते थे। उदाहरण के लिए ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, वहां का हेड ग्रामीणी होता था। फिर ग्राम से मिलके कुछ ग्रामों का एक कलेक्शन विश कहलाता था, जिसको हम विशपति कहते थे, और कुछ विश मिलके एक जन बनाते थे जिसका हेड जनपद होता था या जिसका मुख्यालय जनपद में होता था, जिसको आज भी उत्तर प्रदेश में हम लोग डिस्ट्रिक्ट को जनपद कहते हैं। फिर वो बहुत सारे जनपद मिलके महाजनपद बनता था, और इस प्रकार से 16 महाजनपद के बारे में सुना होगा। तो ये जो 16 महाजनपद थे ये स्टेट्स थे, राष्ट्र थे, और इन सबको मिलके एक कल्चरल राष्ट्रवाद जिसको हम लोग बोलते हैं वो इंडिया या भारत बनता था। वेदों में हमको राष्ट्र और देश की अवधारणा भी मिलती है, जैसे स्वयं राष्ट्राणी रक्षसी अर्थ अथर्ववेद में मिलता है कि हम राष्ट्र की रक्षा करेंगे तो राष्ट्र के नेतृत्व में या राष्ट्र के सानिध्य में हम सभी की रक्षा होगी। देशोपसर्गा समूह नो भगति अथर्ववेद। यजुर्वेद में आदर्श राष्ट्र के भी 3 गुणों का उल्लेख मिलता है। जो 3 गुण होते हैं, एक स्वराजस्थ हो अर्थात स्वतंत्र हो, अभी भी हम लोग पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ते हैं। जन भ्रतस्थ हो अर्थात जन हितकारी हो, ये यजुर्वेद में इसका उल्लेख है। फिर विश्व भ्रतस्थ अर्थात विश्व कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो, ऐसी यूनिट एक राष्ट्र कहलाती है। ये यजुर्वेद की परिभाषा है। अथर्ववेद में भी राष्ट्र की उन्नति के लिए 2 गुण बताए गए हैं। जो 2 गुण है, पहला है तप, जिसको हम लोग अनुशासन या डिसिप्लिन कहते हैं। अगर किसी राष्ट्र में डिसिप्लिन है तो उस राष्ट्र का विकास होगा। दूसरा दीक्षा है। दीक्षा का अर्थ होता है समर्पण, मीन्स डेडिकेशन, कि अगर हमारा या पब्लिक का उस कंट्री के प्रति डेडिकेशन है तो उसका विकास निश्चित है। फिर ये जो ग्रामीणी होता था, ग्रामीणी को राजन को इलेक्ट करने के लिए वोटिंग राइट्स थे, कि जो ग्राम का अधिपति है, जो ग्राम से चुन के जाता है, जिसको आजकल हम लोग सरपंच कहने लगे हैं, पहले इसको हम लोग पौर कहते थे। इसी से शब्द बना है महापौर, ये संस्कृत का शब्द है। तो पहले जो पौर होता था, जो ग्राम का प्रमुख होता था, उसको राजा को चुनने का अधिकार था। अब अगर हम लोग ऐसा सोचें कि ये कल्पना है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे श्रेणी। श्रेणियां सुना होगा, जिसका या निगम, श्रेणी या निगम होती थी। श्रेणी या निगम का हेड, जो प्रमुख श्रेणी का काम था बिजनेस करना, और निगम उनके एसोसिएशन को कहते थे। तो जो निगम और श्रेणी का जो हेड होता था उसको क्या कहते थे? निगमपति या मुख्य श्रेणिक या श्रेणिक या श्रेष्ठी, जो उनमें श्रेष्ठ है। तो हमारा मध्य प्रदेश बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये दक्षिणा पथ पर स्थित था, जो नॉर्थ से दक्षिण में साउथ में जाने के लिए एक बिजनेस रूट था, जो विदिशा उज्जैनी था। यहाँ पर श्रेष्ठी बिजनेस करते थे और वो अपने जो हेड है उसको इलेक्ट करते थे, और मध्य प्रदेश में उनका प्रमुख स्थान था। और जो दशपुर है, जिसको हम लोग आजकल मंदसौर कहते हैं, उसका प्राचीन नाम दशपुर था। दशपुर में एक मंदिर है जो पशुपतिनाथ का मंदिर है। पशुपतिनाथ के मंदिर में एक शिलालेख लगा हुआ है, वो विश्व का सबसे प्राचीन विज्ञापन माना गया। जो विज्ञापन का कॉन्सेप्ट है, एडवर्टीजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे मध्य प्रदेश का है और वो वैदिक कालीन भी है। जो दशपुर का मंदिर है पशुपतिनाथ का, उसमें अभिलेख है
जो किसी श्रेणी के प्रमुख द्वारा लगाया गया। फैक्ट ऐसा है कि वो वहां पर मंदिर में हमेशा दीप जलता है। दीप के लिए ऑयल की व्यवस्था कौन करेगा? तो ऑयल की व्यवस्था करने के लिए किसी श्रेणी या श्रेष्ठी से कहा गया और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि हम इनको वर्ष भर ऑयल देंगे और ऑयल के एवज में यहाँ पर हम कुछ नोट डाउन करेंगे या नोट कराएंगे। तो उन्होंने उसमें नोट कराया क्योंकि वो साड़ी बिजनेस श्रेष्ठी मतलब दल, जो बहुत सारे बिजनेसमैन थे जो साड़ियों का बिजनेस करते थे, उनका हेड था। तो वहां पर शिलालेख में लिखा है कि जो इस मंदिर में दान देने वाले तेल से संबंधित श्रेणी, उसका कुछ नाम है लिखा हुआ है, उन श्रेणी समूह से जो स्त्री साड़ी खरीदेगी वो अपने प्रिय को और अधिक प्रिय लगेगी। ये वहां पर लिखा हुआ है। अब इस कॉन्सेप्ट का, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको विश्व का सबसे प्राचीन विज्ञापन, जो पेड विज्ञापन बोलते हैं ना, विज्ञापन का कॉन्सेप्ट या सबसे एंशिएंट एडवर्टीजमेंट हम उसको कह सकते हैं। ये यहाँ पर इसका बताने का उद्देश्य ये है कि कैसे श्रेणी के भी इलेक्शन होते थे और उसका जो हेड होता था वो एग्रीमेंट करता था किसी से और जो श्रेणी के उनकी एक्टिविटीज को वो कंटिन्यू कर सकता था। फिर मध्यकाल में भी हम देखेंगे कि बंगाल में बहुत अराजकता हो गई। वहां पर एक पाल वंश था, सुना होगा, बंगाल का पाल वंश। उसकी स्थापना कैसे हुई थी? उसका जो फाउंडर था उसका नाम था गोपाल। गोपाल एक सैनिक था और बहुत प्रसिद्ध था पब्लिक के बीच में। तो पब्लिक ने जब देखा कि बंगाल में अराजकता है तो उन्होंने गोपाल को एक किंग के रूप में, राजा के रूप में इलेक्ट कर लिया। और ये हम देखते हैं कि 7वीं या 8वीं शताब्दी की घटना है, 7th सेंचुरी की। 7th सेंचुरी तक भी हमारे यहाँ पर राजा को या किसी किंग को इलेक्ट करने का प्रचलन था। फिर साउथ में हम देखते हैं चोल चेर डायनेस्टी में हम लोग बात करते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक की वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, वहां पर ग्राम की एक आत्मनिर्भर व्यवस्था थी और ग्राम के लोग, जो नाडु कोट्टम कहलाता था, वहां के लोग अपने हेड को इलेक्ट करते थे और स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इलेक्टेड पर्सन के द्वारा वहां पर ऑर्गेनाइज होता था। तो ये क्या 11th और 13th सेंचुरी तक भी हमको चोल डायनेस्टी में इलेक्शन देखने को मिलते हैं। तो ऋग्वेदिक काल से हम देखेंगे कि जो अभी हमने बात की मल्ल, वज्जी, लिच्छवी, एकदम और लेटर मेडिवल पीरियड में हम लोग आके देखेंगे तो साउथ इंडिया में भी हमको इलेक्शन के एविडेंस बहुत सारे मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारत है, जो इंडिया है, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ के लोगों के ब्लड में डेमोक्रेसी है, इसीलिए तो यहाँ पर डेमोक्रेसी सक्सेस है। आज हम लोग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के रूप में है क्योंकि हमारा एंशियंट टाइम लगातार हम डेमोक्रेट मेंटेलिटी के लोग रहे हैं, इसीलिए ये बात हम सभी लोग को सूट भी करती है। फिर वेदों का जो अंतिम लक्ष्य है वो है राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी। और फिर हम देखते हैं कि जब वेदों की रचना हो रही थी तो भी स्टेटलेस सोसाइटी थी। जब डिस्क्रिमिनेशन हुआ, राक्षसों ने बहुत सारी संपत्ति का अपने पास रक्षण कर लिया, वो मेंटेलिटी आज भी देखने को मिलती है। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी प्रॉपर्टी को एक ही जगह एक्यूमुलेट करने की मेंटेलिटी पे काम करते हैं। तो ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है, ये लगातार प्राचीन काल से हम देखते आ रहे थे।
तो जब हम देखते हैं वैदिक काल में, जब ये सब समस्या आने लगी, जब समाज में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं रही, तो फिर देवासुर संग्राम हुए, देव और राक्षसों के संग्राम हुए, और उन्होंने फिर बाद में इलेक्शन प्रोसेस में वो आए। लेकिन इसके पहले राज्य विहीन समाज था, स्टेटलेस सोसाइटी थी। उसमें क्या था, जो प्री वैदिक कल्चर देखने को मिलता है, या जो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले, इंडस सिविलाइजेशन के पहले देखने को मिलता है, उसमें था कि स्टेट इंडिपेंडेंट था, सारे लोग अपना काम करते थे, और नो क्राइम, नो डिस्क्रिमिनेशन, सारे को सारे पूरे राइट्स थे। और क्राइम क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी एक थ्योरी थी जो पाप और पुण्य पर आधारित थी, कि कैसे अगर कोई क्राइम करेगा तो ऊपर देखने वाला है। कोई कहीं भी क्राइम कर रहा हो, डेंस फॉरेस्ट में जाके भी क्राइम कर रहा हो, तो उसको लगता था कि यहाँ भी कोई वॉच कर रहा है। मतलब सर्विलांस सिस्टम सभी जगह है, कि हमको पाप पड़ेगा, फिर नेक्स्ट हमारा जो जन्म होगा उसमें हमको पनिशमेंट मिलेगा, अगले जन्म में होगा, अगर हम इस जन्म में क्राइम करेंगे तो ये बनेंगे, ऐसा सुना होगा छोटे में। तो इसके कारण हमारे यहाँ क्राइम कम था। जैसे जैसे ये धारणा टूटती गई लेटर वैदिक एज में आते हुए, तो हमारे यहाँ क्राइम बढ़ते गया। फिर पुलिस सिस्टम आया, जिसको हम लोग दंड नायक कहते हैं। गुप्त काल में दंड नायक देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद भी दंड नायक देखने को मिलते हैं, प्रति जो थे, फिर जज और जजमेंट और सारा सिस्टम आ गया। फिर मनु की संहिता आ गई, याज्ञवल्क्य की आ गई संहिता, बहुत सारी स्मृतियां आ गई, चाहे वो नारद स्मृति हो, बृहस्पति स्मृति हो, जिमूत वाहन का दायभाग हो, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा हो, इन सब में कोड ऑफ कंडक्ट आ गए। ये कोड ऑफ कंडक्ट जैसे जैसे आते गए, क्राइम लगातार बढ़ते गया। और आज भी हम लोग बहुत सारी पुलिस, कई प्रकार की महिला पुलिस, होम गार्ड्स, इंटर सर्विलेंस के लिए कैमरे लगाते जाने के बाद भी क्राइम बढ़ते जा रहा है। उसका कारण है क्योंकि हम लोग वैदिक थ्योरी से पीछे हटते जा रहे हैं, कि यहाँ कोई कैमरा नहीं है, यहाँ कोई पुलिस नहीं है, तो हम लोग क्राइम कर सकते हैं। तो ये जो मानसिकता है हमारी क्राइम करने की, कि जो अच्छा व्यक्ति भी है, जब भी उसको चांस मिलता है तो वो क्राइम कर लेता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन पहले जो राज्य विहीन समाज था, जिसमें राज स्टेट नहीं था, स्टेटलेस सोसाइटी, जिसमें किंग नहीं था, उसमें दंड नायक नहीं थे, पुलिस नहीं थी, सर्विलांस के लिए कैमरे नहीं थे, ऐसा वैदिक टाइम का जो राज्य था, स्टेट था, जो पॉलिसीज थी, पॉलिटिक्स थी, उसमें क्राइम नहीं था। तो आज भी हम लोग जब जनजातीय समाज के बारे में सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, तो ट्राइब सोसाइटी में हमको स्टेटलेस सोसाइटी दिखती है, और वहां पर बहुत कम क्राइम देखने को मिलता है। और अब चूंकि वहां पर क्राइम बढ़ रहा है, तो हम लोगों का एक चिंतन या एक चिंता बढ़ रही है कि क्या क्यों कैसे ट्राइबल सोसाइटी में, फॉरेस्ट में भी क्राइम बढ़ते जा रहा है, जबकि वहां पर कोई पुलिस नहीं है, कोई सर्विलांस सिस्टम नहीं है, इसके बाद भी वो बहुत अच्छे से उनका पूरा सिस्टम चलता है। तो ये वैदिक काल की जो राज्य व्यवस्था थी, या पॉलिटिक्स थी, या पॉलिसी थी, उसको हम लोग बहुत डिटेल में देखते हैं। फिर अभी सेबेस्टियन सर ने जो बौद्ध एज की बात की थी, तो बौद्ध एज में भी हम लोग देखते हैं कि जो उनका संघ था, संघ में निर्णय बहुमत से होते थे। उपसंपदा, मतलब सभी लोग, उपसंपदा एक कॉन्सेप्ट है कि सभी लोग संघ में बैठ के संघ के प्रमुख को चुनते थे। फिर ऋग्वेद का मंत्र है, समानो मंत्र समिति समानी, समानम मंत्र अभिमंत्र ये वा, समानेन वो हविषा झोमी, समानेन वा आहुति। इसका अर्थ है कि हम सभी समान हैं, हम सभी लोग मिलके एक साथ चिंतन करें, हम सभी लोग मिलकर
एक साथ विमर्श करें और राष्ट्र के लिए चिंतन करके समाज के सभी समान बंधुओं के साथ मिल बैठ के बात करें। फिर एक और मंत्र है, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागय यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। हम सभी लोग एक संगठन बनाएं, हम सभी इस राष्ट्र को समुन्नत करने के लिए संगठित हों और देवताओं के आशीर्वाद से इस राष्ट्र को समुत्कर्ष तक पहुंचाने में हमारा योगदान हो, ऐसा ऋग्वैदिक धारणाओं का अनुबंध हमको देखने को मिलता है। जब ऋग्वेद में व्यक्ति इलेक्ट हो जाता है राजा के रूप में, तो उसकी शपथ का भी उल्लेख है। उसका वो शपथ क्या लेगा, इसका बहुत डिटेल से उल्लेख मिलता है। ये उल्लेख हमको मिलता है शतपथ ब्राह्मण कांड नंबर 5 पर, जिसमें वो बोलता है, यांचा रात्रि माजिए हम या प्रतास्मि तदोभ्यम मंत्रेण इच्छा पूर्ति मे लोकम सुक्रतुमायु प्रजाम वजिथा यदि ते द्रुहति मेतिति। इसका अर्थ है कि जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ है, उस रात्रि से लेकर जिस रात्रि में मेरी मृत्यु होगी, उन दोनों के मध्यम में मैंने जो भी पुण्य कर्म किए हैं वे सब नष्ट हो जाए और मैं स्वर्ग समस्त शुभकार आयु संतान से वंचित हो जाऊं यदि मैं किसी भी प्रकार से देश और जनता के प्रति द्रोह करूं। ये राजा की प्रतिज्ञा है। इससे ज्ञात होता है कि देशद्रोह और जनता के साथ विश्वासघात राजा के लिए अक्षम्य अपराध था। फिर अगर हम इसको अपने जो हमारे वर्तमान के जो लीडर्स हैं उनसे अगर हम लोग इसकी कंपेटिबिलिटी करेंगे तो क्या होगा। उनके बहुत सारे घोषणा पत्र होते हैं, बहुत सारे कमिटमेंट करते हैं, लेकिन प्रजालक्षी, राज्य लक्षी या राष्ट्र लक्षी कार्य को घोषित नहीं करते। तो हम लोग अगर वेदों का एग्जाम्पल भी देते हैं तो राजा के क्या कर्तव्य होंगे, उनके क्या कार्य होंगे और उनकी क्या शपथ होगी, वो सारा देखने को मिलता है। राष्ट्र की अथर्ववेद का कथन है कि राष्ट्र को सुदृढ़ बनाओ और सौभाग्य की ओर ले जाओ। इदम राष्ट्रम पिप्रहि सौभागाय विश्व एक मनु मदंतु देवा। ये अथर्ववेद का है। राष्ट्र की सुदृढ़ता से आर्थिक अभ्युदय होगा। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन को टच करने वाली है, क्योंकि हमारा राष्ट्र सुदृढ़ है। ऋग्वेद में राजा को कठोर अनुशासन की शिक्षा दी गई है। यजुर्वेद में राजा को निर्दोष कहा गया है अगर वो उग्रवादी या कठोर दंड देता है तो। दुर्जनों से कठोर व्यवहार और मित्रों से प्रेम से वश में करने को कहा गया है। और राजा का कर्तव्य भी बताया गया है कि प्रजा की कैसे सुरक्षा करे और उनमें सुरक्षा की भावना को उत्पन्न करे। अभियानी कृण्वन अर्थात राजा प्रजा की रक्षा करे और प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा को अपना पूर्ण समर्थन दे। व्यापार और शिक्षा को भी संरक्षण दे, व्यापारियों और विद्वानों की रक्षा करे। रक्षाम चानो मघोन पाही सूरी। अथर्ववेद में भी कहा गया है कि राजा द्वारा सड़कें और पुल बनवाए जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग वैदिक टाइम का जो एक पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल सिनारियो है उसको वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक या रेलेवेंट बनाकर उसको सिलेबस में समाहित कर सकते हैं। और एक जो हमारे मन में धारणा रहती है कि जो हमारे प्राचीन वांग्मय है उसमें बहुत रिलेवेंट मटेरियल नहीं मिलता है,
तो हम सभी को इस धारणा की भी पुष्टि होती है कि जो हमारा भारतीय ज्ञान है, ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसमें बहुत सारे आख्यान सभी सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट को लेकर मिलते हैं। इसीलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित किया गया है कि जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, मेडिकल साइंस से हो या इंजीनियरिंग के हो, उन सभी में जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो भारतीय विज्ञान है, ज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है या हमारा हिस्टोग्राफी है, उन सभी को प्रथम यूनिट में समाहित करके विद्यार्थियों को ये बताएं कि जो भारतीय परंपरा है उसको वो रिलेवेंट है आज भी। अब सारे डेफिनेशंस हमको एडम स्मिथ की या हेरोडोटस की या प्लेटो या अरस्तु की लेने की आवश्यकता नहीं मिलती है, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमको बहुत सारा इकोनॉमिक्स मिलता है, पॉलिटिकल साइंस मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र या कौटिल्य एक जगह लिखते हैं कि हमने जो टैक्स व्यवस्था लगाई है वो भारतीय परंपरा के अनुसार है, और वैदिक जो टैक्स सिस्टम है उसमें बताया कि कैसे राज्य को टैक्स आरोपित करने चाहिए। तो कौटिल्य ने कहा कि जिस प्रकार हनी मधुमक्खी फूल से रस निकालकर शहद बनाती है, उसी प्रकार राज्य को पब्लिक से या उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट से टैक्स लेके राज्य को समुन्नत करना चाहिए। जिस प्रकार मधुमक्खी फूल से रस लेती है तो फूल भी और समृद्ध होता है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो समझते होंगे कि उससे जो एब्स्ट्रैक्ट है उससे अगर हम लोग लेते हैं तो फूल की लाइफ और बढ़ती है और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। उसी प्रकार जनता से अगर हम लोग थोड़ा सा टैक्स देंगे तो जो समृद्धि है राष्ट्र की वो उन्नत होगी। इस एग्जाम्पल से उन्होंने टैक्स सिस्टम के बारे में बताया, और जो भारतीय टैक्स सिस्टम है वो उसको अभी अगर हम लोग लागू करते हैं तो ये और आगे बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मध्यकाल में आप देखेंगे कि जब विदेशी आक्रमणकारी इन्वेडर्स आए तो उन्होंने 80% तक टैक्स लगाया था। इसी कारण हमारे यहाँ जो इतने अकाल पड़े और एकदम हम लोग पुअर कंट्री के रूप में डेवलप होने लगे, उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ टैक्स सिस्टम एकदम अकॉर्डिंग टू नॉन इंडियन सिस्टम के था। जब इसको भारतीय टैक्स सिस्टम से अगर हम लोग इसको लागू करते हैं जैसे आजकल हो रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसा क्योंकि विषय तो बहुत बड़ा है और अनलिमिटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि राष्ट्र, देश, राजा के कार्य, राजा के टैक्स सिस्टम, प्रजा के कार्य, ऐसा पूरा का पूरा वांग्मय हमको या पूरा एक सिस्टम हमको देखने को मिलता है वैदिक पीरियड में। चारों वेदों में राज्य और राज्य नीति से संबंधित विषय देखने को मिलते हैं। इसीलिए राजनीति को हम लोग नेगेटिव नैरेटिव्स में ना लेके इसको पॉजिटिवली रहने की आवश्यकता है। जब कभी लोग बोलते हैं कि राजनीति में नहीं जाना चाहिए, वो बात तो अपने लिए ठीक नहीं है, तो जब हम ऐसा सुनते हैं तो बहुत अच्छा भी नहीं लगता कि भारत में राजनीति को इतना गंदा क्यों मानते हैं। जबकि हमारे पड़ोसी देश में अगर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी आलोचना हम कर सकते हैं पाकिस्तान की, वहाँ की इकोनॉमी की, वहाँ की पॉलिसीज की, लेकिन जब कभी आप वहाँ के वीडियोस देखोगे तो वहाँ के एक छोटे से छोटे पर्सन जो हॉकर है, उसके पास वो बहुत गरीब है, लेकिन उसको पता है कि पाकिस्तान का मित्र राष्ट्र कौन सा है, पाकिस्तान के अमेरिका से क्या संबंध है, हमको अमेरिका से क्यों डील नहीं करनी चाहिए। उनका जो सीपैक बन रहा है उसकी जानकारी वहां के प्रत्येक व्यक्ति को है। वहां के बहुत छोटे से छोटे व्यक्ति को पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का नॉलेज है। वहां के लोग पॉलिटिक्स को नेगेटिव सेंस में नहीं लेते।
भारत में ये सुधार की आवश्यकता है कि पॉलिटिक्स को नेगेटिव सेंस में हमको भी नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ छोटे से छोटे व्यक्ति तो छोड़ो, हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े नेता, प्रोफेसर को भी भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत के किस किस से रिलेशन है, हमारे फ्रेंड कंट्रीज एंड एनिमी कंट्रीज के बारे में नॉलेज नहीं होता है। अगर कोई इसके बारे में बात भी करना चाहता है तो वो उसको बंद करा देते हैं कि ये हमारे सब्जेक्ट का ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा करके। तो जो हमारे यहाँ एक नैरेटिव्स है, नेगेटिव नैरेटिव्स हमारे बीच में जो प्रचलित हैं, जो विकसित हो रहे हैं, इसीलिए भारत के लिए कुछ लोगों ने नकारात्मक स्वर में या नेगेटिवली कहा है, डिमोरलाइज करने के लिए, कि भारत का एक ऐसा तंत्र है जहाँ पर निकम्मे लोग, बेवकूफ लोगों के द्वारा संचालित राष्ट्र या संचालित शासन प्रणाली है। इसीलिए वो जो क्वेश्चन रेज हुआ था, इस उसका रीजन ये था कि जो हमारे यहाँ नेगेटिव नेरेटिव सेट होते हैं, हमको इन नेरेटिव्स को वर्तमान समय के हिसाब से देखना है और ऐसे नेरेटिव्स को डिक्लाइन करते हुए या हटाते हुए अपनी बात को विश्व के समक्ष रखना है। अपनी बात को मैं यही पूर्ण करूंगा क्योंकि इसमें अनलिमिटेड है अभी। और अथर्ववेद तो इंडियन पॉलिटी का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। ऋग्वेद इंडियन पॉलिटी का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। ऋग्वेद में राजन के कार्य, राजनीति का विस्तृत वर्णन है, इलेक्शन का वर्णन है। इसीलिए इसका अध्ययन बहुत आवश्यक है और इसमें बहुत सारी पुस्तक भी लिखी गई है जो अमेजोन पे अवेलेबल है, हम उसको परचेज भी कर सकते हैं। हम सभी का आभार व्यक्त करेंगे कि आपने इस इमर्जिंग टॉपिक पर बोलने के लिए हमको कहा। हृदय से आभार व्यक्त करते हैं संगीता मैम का, रंजीत मैडम का भी, मेहता मैडम का भी, कि आपने अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर The forum is open for questions. Any questions from here? The question is, if the leader was elected by elections, then what about the Vanshvalis of kings given in the Vedas and Purans? एक्चुअली जैसे आज भी हम लोग इसको कोई अदरवाइज में नहीं लेना, हम लोग इसको एक क्रिटिसाइज वे में हम इसका आंसर ले सकते हैं। जैसे आज भी इलेक्शन हमारे यहाँ होते इलेक्शन, लेकिन किसी एक परिवार का नाम लिए बिना, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दे तो सारी पार्टी के लीडर्स तो वंशवादी इलेक्ट हो रहे हैं। ऐसी कौन सी पार्टी है, चाहे वो महाराष्ट्र की पार्टी ले लो, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल मंच से तो है नहीं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन ऐसा है तो उसके आंसर में ये रिलेवेंसी बनती है कि चाहे वो बीजू पटनायक दल हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय राजद हो, और बहुत बड़ी पार्टी भी हो। सिंधिया के माता जी भी इलेक्टेड थी, उनका बेटा भी इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। या स्वाभाविक है, उनको राइट है जीतने का। तो जिस प्रकार हम लोग अभी भी बहुत अच्छा डेमोक्रेसी होने के बाद भी हम लोग वंशवादी तो जीत रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर हो, सारी पार्टी में ये सिस्टम है। तो ये पहले भी था, राजा को इलेक्ट कर लिया,
क्योंकि वो प्रभावशाली हो गया तो उसने अपने बेटे को इलेक्ट करा लिया। गोपाल इलेक्ट हुआ, गोपाल पावरफुल हो गया, उसने फिर अपने बेटे को इलेक्ट कराया। 2-3 पीढ़ी तक इलेक्शन चलता रहा, फिर वो किंग बन गए। तो आज भी ये है, इसीलिए अगर हम लोग वैदिक पीरियड को लेके आगे चलेंगे तो हम लोग एक हेल्दी डेमोक्रेसी को डेवलप कर सकते हैं इंडिया में, ऐसा मेरा मानना है। फिर इस पर तो जितना आप रिसर्च करो उतना क्वेश्चन के आंसर के नजदीक हम पहुंचते जाएंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। सर जैसे कि जो राम राज्य का जो मतलब अभी जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा मतलब रहता है, तो राम राज्य की कल्पना के बेस पे हम कैसे एक हेल्दी डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो आप थोड़ा बताइए। जो थियोक्रेसी की बात हम लोग करते हैं उसको कई बार हम लोग किसी भी चीज को हम लोग रिलीजन से जोड़ के बात करते हैं। कई बार बहुत सारी चीजों को रिलीजन से हटके अगर हम लोग देखेंगे तो वही गुड गवर्नेंस की बात है। अगर गुड गवर्नेंस होता है तो इसमें हमको बहुत अच्छी बात होगी। अब जैसे तुलसीदास जी के बहुत सारी चौपाइयों में देखने को मिलता है कि उस राज्य में सारे लोग स्वस्थ हैं, सभी लोगों के लिए एजुकेशन है, सभी लोगों को राइट्स हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि क्रिटिसाइज करते हैं कि राम राज्य है तो फिर तुलसी सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा होगी। तो सीता जी तो उसके आगे अंदर बाहर जा सकती थी, सीता जी बाहर गई थी ना उससे, लेकिन रावण जैसे लोगों के लिए वो लक्ष्मण रेखा है कि रावण जैसे जो लोग हैं वो लक्ष्मण रेखा से अंदर नहीं आ सकते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो राम राज्य को हम लोगों ने नेगेटिव सेंस में लेके हमेशा उसका अनर्थ कर दिया। जैसे अभी सीता के लिए बोला कि पूरे समाज में यही व्याप्त है कि वो लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना पड़ता है सीता जी को, तो ऐसा नहीं है। तो जो राम राज्य में एक बहुत जो दलित जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं, धोबी ने क्वेश्चन रेज कर दिया था ना, तो अगर हम लोग उसको पॉजिटिव सेंस में लेंगे कि सीता जी के अगेंस्ट किसी एक धोबी ने क्वेश्चन रेज किया, तो इसको ऐसे भी तो देखो कि उसको भी क्वेश्चन खड़ा करने का अधिकार था। अभी कोई कर सकता है क्या? अभी हम लोग बोलते हैं राम राज्य से भी अच्छा है, तो एक बहुत धोबी तो छोड़ो, बहुत बड़े बड़े लोगों को भी अपने क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है। तो अगर उस समय ऐसे लोगों को क्वेश्चन करने का अधिकार था, महिलाओं को इतना फ्रीडम था, तो ऐसा राम राज्य हम लोग को स्थापित करना चाहिए। थैंक यू सर एक और सवाल है जो वहाँ पे लिखा है। The question is, earlier the kings were guided by Purohits or Dharma Shastras, but now we are guided by the constitution which promotes secular spirit. Thus the absence of Dharma in politics in accordance with the Vedas. Does it signify anything? बिल्कुल बिल्कुल, गाइडेंस तो हमेशा आवश्यक है, चाहे वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो या धर्मशास्त्र हो। तो जिसको हम लोग धर्म कहते हैं, पहले तो जैसे ये क्वेश्चन रेज किया है तो हमको धर्म और रिलीजन में बहुत डिफरेंस पता होना चाहिए। रिलीजन क्या होता है? जो एक व्यक्ति द्वारा चलाया गया हो, इसका कि ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिलीजन मीन्स एक व्यक्ति द्वारा चलाया गया पंथ, उसकी एक पुस्तक होगी, उसकी एक बुक होगी, उसका एक पूजा स्थल होगा, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये रिलीजन है। अब जो वेदास हैं या जो धर्मशास्त्र हैं, उनका कोई राइटर है क्या? उनके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्या? उनका कोई संस्थापक है क्या? क्या केवल एक बुक है क्या? अभी हमने बहुत सारी बुक्स के नाम गिनाए। सारे ग्रंथ जो हमको जिनको हम लोग धर्मशास्त्र कहते हैं, वो धर्मशास्त्र है, वो एक रिलीजन के बुक नहीं है। रिलीजन वो होता है जिस पर कोई एक व्यक्ति द्वारा संचालित है, एक पुस्तक है, एक धर्म स्थल है। लेकिन जिसकी हम लोग बात करते हैं, जिन धर्मशास्त्रों की बात करते हैं, वहां पर केवल प्रकृति पूजा है, प्रकृति का संरक्षण है।
चाहे ऋग्वेद हो, ऋग्वेद में संपूर्ण ऋग्वेद में केवल प्रकृति पूजा है। उषा देवी की बात है, जो उषा 6 महीने आर्कटिक में 6 महीने या 2 महीने केवल उषा होती है, 6 महीने की रात 6 महीने का दिन होता है। सूर्य चंद्र की उपासना है, पोषण की उपासना है, ऋत की उपासना है। ऋत मीन्स जो इस सृष्टि को रेगुलेट करता है, ऋतुएं उसके अकॉर्डिंग चलती हैं। यहाँ कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, चंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं है, ग्रह है। इंद्र भी कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई सूर्य, वरुण, नासत्य, मित्र, पूषण इनका हेड है। जो वर्षा का देवता है, ऋतु का देवता है, तो ये इन सबको हम लोग एक नाम ले लेते हैं। तो जो ये धर्मशास्त्र है, इन धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग हमको प्राचीन जो धर्म था यही कॉन्स्टिट्यूशन था कि प्रकृति का संरक्षण ही सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था। और आज भी हम प्रकृति के संरक्षण की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो यूनेस्को हो, यूएनओ हो, यूनिसेफ हो, सारे के सारे प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं। जो हमारे वैदिक ग्रंथ भी प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं। इसीलिए उस समय का जो राजन था वो ऐसे धर्मशास्त्रों से गाइडेड होता था। तो आज का राजन भी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सारी अच्छी बातों को करता है, वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको गाइडेड होना जरूरी भी। क्वेश्चन है? ठीक है, थैंक यू। Thank you so much, sir, for acquainting us with the maximum of information related to the ancient precepts, the yesteryears, or precisely the laws observed in the prehistoric. It helps us also to perceive the true essence of Vedas and how is it relevant in the contemporary democratic setup as well. Before going ahead to the valedictory session, I would like to request all the participants to please fill the feedback form. It is there in the WhatsApp groups, or you can also seek the QR code which is there in the registration text as well. It brings us to the closure of today's workshop. It was great having you all with us today, to the online people also, those who have connected with us over the virtual mode. With true conviction, we believe that this session will prove to be propitious, not just now, but for your future endeavors as well, especially for understanding the ethical element in philosophy and the interconnectedness in the underlying meaning attached with politics. You have been a terrific audience this afternoon. Before approaching for the vote of thanks, I would now like to invite Mr. Ashish Ogle, Assistant Professor, Public Administration, to deliver the vote of thanks. It is a proud privilege for me to propose the vote of thanks at this valedictory session of the ICPR sponsored intercollegiate workshop in commemoration of the philosophy. It is my prime duty to acknowledge the effort and presence of all those who make this workshop possible. Hello. Hello. Yes. So it is my prime duty to acknowledge the efforts and presence of all those who made this workshop possible. First and foremost, I would like to thanks to the ICPR, that is Indian Council of Philosophical Research, for sponsoring this intercollegiate workshop. I also would like to acknowledge both the resource persons, Professor C.D. Sebastian and
Dr. Alkesh Chaturvedi. Sir, I really just greatly, I must say, influenced from the word, what actually the lenses of Vedas has actually told by the Alkesh sir, in which one of the very important sentence he speak, that was the surveillance system. The ancient and the present surveillance system, what actually he speak, I was really influenced from that, in which he discussed the surveillance system is of the two types, tangible and intangible. The early Vedas has the intangible surveillance system, but in the present time we have the tangible. That was the very great difference, because of in the present time there was a tangible surveillance system, and that is the reason. Actually, tangible stands for what? We can feel by our senses. हम कानों से सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, और यही कारण है कि आज जो सर्विलेंस सिस्टम है, जब हमें हमारी इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, so we are completely free to do wrong. That was the very greatest problem. जबकि पहले जो था, that was the intrinsic system of the surveillance. और जो intrinsic system था, यानी कि अंतर्निहित बात कर सकते हैं, और वही हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसमें everybody was feel the presence of surveillance ever, even in the sleep. That's good. Thank you, sir. Thank you so much. It is with great pleasure that I express my gratitude towards our principal, Dr. Father John PJ, for all the guidance and support that he has constantly given us. A special note of thanks goes to our respected Vice Principal, Dr. Sister Sonia Kurian, for always being with us in all that we do. This workshop was meticulously planned and executed by the tireless efforts put in by Ms. Ranjit Kaur ma'am, Dr. Sangeeta Mahashabde ma'am, and Mr. Siddharth Patel sir. Need to be acknowledged at this moment. Thank you, ma'am, and thank you, sir, for your leadership in the organizing this workshop. This workshop would not have been possible without the active participation of the senior faculties, member of the department. Thank you for your involvement. Thank you, everyone. A special thanks goes to the technical and support staff for all the assistance rendered. Thank you, sir. Last but not the least are the students who are offline and online joined with us. I just thankful to you all for patiently hearing to us. I would like to express sincere gratitude to all those who have contributed in one way or the other to make this workshop successful. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Before going ahead, I would now like to invite Dr. Chaturvedi, sir, Manju ma'am, Ranjit ma'am, and Sangeeta ma'am to confer the certificates for the valedictory ceremony. I now invite professors from Government Gitanjali College, Dr. Manju Sharma and Dr. Bhuvneshwari Sumi. Please give a round of applause.
Which college is this? This is Sarojini. Okay. Next in line is Sarojini Naidu College. I request all the student representatives to please come and collect the certificates. Himanshi Pandit. Himanshi Pandit. Vaishali Avasti. Yokshita Rajput. Anchal Pandey. Rakshanda Khan. Priya Sisodia. Ayushi Joshi. Lovely Kushwa. Muskan Gupta. Sanjeevni Shukla. Next, we have students from Hamidia Arts and Commerce College. Shivansh Singh. Kunal. Naushad. Ankush. Students from Hamidia College, please come in. Students, please join in here. Avinash Chaudhary, please come fast. Students from BSS. Vincent, Vincent Vasunia, Manasvi Garg, Neelam Bhattacharjee, Manjula Daniel, Pooja Devi, Pooja, Harmeet Kaur, Prithvi Rai Singh, Prithvi, Sakshi Malviya, Sakshi Malviya. Okay. Dress certificates, please collect it from Siddharth sir. Students are requested to please fill the feedback form. Also, thank you so much. Also, thank you so much for joining with us this evening. We look forward to more such association.
You may disperse. Certificates is taken. No, for other colleges. Students from BSS, they can collect it from Siddhartha later on. Now you may disperse.